Hello to all my dear CS buddies. So today's topic is that how to study theory subjects without forgetting a CS student reality. First of all, be honest with yourself. Have you ever felt this that you studied a theory chapter properly? You understand each and everything about it, but after 10 to 15 days, your brain is just blank. और फिर एग्ज़ाम के टाइम लगता है कि ये मैंने पढ़ा था बट अब याद क्यों नहीं आ रहा? If yes, then this video is for you. Because today I'm not going to tell you that just read, revise and write like everyone else. Today I will explain that why CS students forget theory and how to study theory subjects in a way that actually stays in your mind. First part is biggest myth about theory study. Let's break the biggest lie first. Theory subjects सिर्फ रटने के लिए होते हैं, right? The answer is completely no. Theory subjects are not meant to be memorized once. They are meant to be understood, connected and repeated. CS theory is designed to test your clarity, your application and your structure writing. अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो तो आप अपने ब्रेन को सिर्फ टेम्पररी एंगेज कर रहे हो. समझो इस बात को कि रीडिंग क्रिएट्स फेमिलियरिटी, नॉट मेमोरी. ओके. Part 2 is that why you forget theory, the real reasons behind it. Most students forget theory because they study passively. They don't revise on time. They don't write. They study too much at once without taking a break. They confuse understanding with remembering. और फिर बोलते हैं अपने फैकल्टी से कि सर और मैम थ्योरी याद ही नहीं रहती. प्रॉब्लम मेमोरी का नहीं है. योर मेमोरी इज़ गुड बट प्रॉब्लम इज़ इन द मेथड. So part 3, what is the correct approach or what is the right way to start a theory chapter? Whenever you open a theory chapter, never start with कि आज ही finish करना है. See, this approach is used when you had revised one time or you had completed the chapter once and you just want to revise again. Start with कि आज समझना है. If you had not started that chapter and if you want to start, then this approach is correct. आज समझना है. Step 1 is first reading, only understanding. No highlighting, no underlining, no pressure to learn each and everything. बस रीड करो एंड आस्क ऑथर क्या कहना चाह रहा है, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू मी और आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. टेक अ क्वेश्चंस टू योर सेल्फ. देन अगर फर्स्ट रीडिंग में सब याद नहीं रहा, गुड. इट्स नॉर्मल दैट इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन योर फर्स्ट रीडिंग. Part 4 is active study. The game changer will help you to understand what's the theory and helps to understand that what they are trying to say. This is where most students fail. After reading or watching lecture, you have to close your book. Then ask yourself that मैंने क्या पढ़ा, मैं किसी और को कैसे समझाऊंगा या समझाऊंगी if someone will ask this concept to me. अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे मतलब आपने सिर्फ पढ़ा है, सीखा नहीं है. और यही दिक्कत है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कॉन्सेप्ट को. जब तक वो कॉन्सेप्ट आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करोगे, दिस विल बी स्टोर्ड जस्ट इन द टेम्पररी फॉर्म इन योर ब्रेन. सो ये रूल याद रखो कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. चाहे मिरर के सामने बोलो, चाहे इमेजिनरी स्टूडेंट को समझाओ, बट यू नीड टू एक्सप्लेन. अंटिल यू डोंट डू दिस, everything will be going just west. If you will read 10 times, then also it will be going to west. Part 5 is writing is non-negotiable. Let me very clear here that CS theory is a writing exam, right? You just don't have to speak and your exam will be over. It is not like that. अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और लिख नहीं रहे तो एग्ज़ाम में पैनिक जो है वो तो गारंटीड है. कुछ नहीं याद आएगा और सब कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, नो क्लैरिटी. You don't need to write each and everything. I'm not saying that just copy and paste whatever your faculty has said to you.
but you must write headings, you must write keywords, you must write short answer, you must write that answer which is very very important to you, and faculty has said that these are the questions which is guaranteed that can be asked in the exams. Write that. Frameworks you should write that. बिना थियोरी याद रहना एक इल्यूजन है, टेम्पररी फॉर्म है अपने रीडिंग को अपने ब्रेन में स्टोर करना. Part 6 is smart notes, not beautiful notes. Each and every time, even in my channels, even in my groups, WhatsApp channels and WhatsApp group, I used to say that stop wasting an hours on aesthetic notes. See, if you are preparing from the home, nobody is seeing your notes, right? So why you are making the beautiful notes and wasting the time on making that notes very aesthetically? CS notes should be short, structured, revision friendly. Best format is heading, bullet points, keywords, simple language. आपका गोल नोट्स बनाना नहीं है, आपका गोल एग्जाम में कैसे रिकॉल करना वो है. Part 7 is revision timing, most ignored part. Mostly majority ignored part. रिविजन का मतलब लास्ट मंथ नहीं होता. ये मैंने पहले का भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिवीजन का मतलब लास्ट मंथ नहीं होता. फॉलो दिस सिंपल रूल. रिवाइज विद इन 24 hours, then within 7 days, and then once in a month. The very famous rule which is followed by majority of student, but some student ignore this part. इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है. जब रिवीजन लेट होती है तब फॉरगेटिंग भी नेचुरल होती है, उसमें मेमोरी की कोई दिक्कत नहीं है. Part 8 is stop studying theory very emotionally. Many CS students study theory like this कि आज मूड है तो 3 चैप्टर्स, कल मूड है तो अभी नहीं करना. But theory needs discipline, not your mood. चाहे आज सिर्फ 5 पेज ही से क्यों ना पढ़े, बट यू हैव टू रीड you have to read everything properly. Consistency beats intensity, and it is always follow this rule. Part 9 is how to revise theory without getting bored. रिविजन बोरिंग तब होती है जब नोट्स बड़े हो, मेथड सेम हो. चेंज योर रिविजन स्टाइल. योर ब्रेन नीड्स समथिंग इंटरेस्टिंग. One day reading notes, next day write headings, another day recall orally, another day solve questions. Brain को variety चाहिए. Okay, make some interesting. Part 10 and the last is exam oriented thinking. While studying theory, always ask कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा. Theory is not about just pages. Theory is about your presentation plus the clarity you have for that concept plus relevance. So, at the end, I just wanted to tell that let me summarize this very clearly. To study theory subjects without forgetting, stop passive reading. Focus on understanding. Explain what you study. Write regularly. Revise smartly. Be consistent, not emotional. और सबसे important point, थियोरी वीक नहीं होती. योर अप्रोच इज सो वीक फॉर इट. अगर आपने सही तरीके से थियोरी पढ़ना सीख लिया तो CS का जो हाफ प्रेशर खुद ही काम हो जाता है. इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इवन लिटिल, शेयर इट विथ योर CS buddy, and remember, you don't forget because you are bad. You forget because no one taught you how to remember your theory subjects. We are fixing that together. Okay, so do like, share, subscribe and comment to my channel. Thank you.